అవిశ్వాస తీర్మానాల సందర్భంగా లోక్సభలో ప్రతిష్టంభన కొనసాగుతోంది. ఇవాళ కూడా అవే దృశ్యాలు కనిపించాయి. లోక్సభ 12 గంటలకు వాయిదా పడింది. సభ ప్రారంభం కాగానే అన్నా డీఎంకే తెరాస సభ్యులు నిరసనకు దిగారు. కావేరీ బోర్డు ఏర్పాటు చేయాలని అన్నా డీఎంకే సభ్యులు నినాదాలు చేశారు. రిజర్వేషన్ల అంశంపై వెల్లోకి వెళ్లి తెరాస సభ్యులు నిరసనకు దిగారు. अध्यक्ष महोदय, प्रश्न क्रमांक 341 मिनिस्टर टेबल करो. स्टेटमेंट इज लेड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस. अध्यक्ष महोदय, मैं इसके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय जी को पूछना चाहता हूं कि आप जानते हैं कि अभी के स्थिति में सारे भारत देश में करीबन 1/3 आबादी नागरिक आबादी है और सबसे ज्यादा मुसीबत यह है कि नागरिक एरिया में टू मीट अगेन एट 12 o'clock. అవిశ్వాస తీర్మానాల సందర్భంగా లోక్సభలో ప్రతిష్టంభన కొనసాగుతోంది. ఇవాళ కూడా అవే దృశ్యాలు కనిపించాయి. లోక్సభ 12 గంటలకు వాయిదా పడింది. సభ ప్రారంభం కాగానే అన్నా డీఎంకే తెరాస సభ్యులు నిరసనకు దిగారు. కావేరీ బోర్డు ఏర్పాటు చేయాలని అన్నా డీఎంకే సభ్యులు నినాదాలు చేశారు. రిజర్వేషన్ల అంశంపై వెల్లోకి వెళ్లి తెరాస సభ్యులు నిరసనకు దిగారు. अध्यक्ष महोदय, प्रश्न क्रमांक 341 मिनिस्टर टेबल करो. स्टेटमेंट इज लेड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस. अध्यक्ष महोदय, मैं इसके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय जी को पूछना चाहता हूं कि आप जानते हैं कि अभी के स्थिति में सारे भारत देश में करीबन 1/3 आबादी नागरिक आबादी है और सबसे ज्यादा मुसीबत यह है कि नागरिक एरिया में टू मीट अगेन एट 12 o'clock. माननीय सदस्यगण, मुझे विभिन्न विषयों पर कुछ सदस्यों से स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई. यद्यपि मामले महत्वपूर्ण हैं, तथापि इनके लिए आज की कार्रवाई में व्यवधान डालना अनिवार्य नहीं है. मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना को भी अनुमति प्रदान नहीं की है. पेपर्स टू बी लेड ऑन द टेबल. श्री हरदीप सिंह पुरी. Madam, with your permission, I rise to lay the papers listed against my name at serial number 2 in today's revised list of business. Shri Ramdas Athole. Respected Madam, I beg to lay on the table of the House papers a copy of each Hindi and English version listed at serial number 3 against my name in today's revised list of business. Thank you. Shri Hansraj Ahir. अध्यक्ष महोदय, मैं अपने नाम के सम्मुख आज के पुनरीक्षित कार्य सूची की क्रम संख्या 4 में उल्लेखित पत्रों के सभापति पर अपनी अनुमति चाहता हूं. श्री कृष्णपाल आपके नाम से आज की कार्य सूची में क्रम संख्या 5 पर अपने नाम के समक्ष सूचीबद्ध दस्तावेजों को सदन करना चाहता हूँ. श्री किरण रिज्जू जी. Table of the House, the papers listed against my name at serial number 6 in today's revised list of business. Shri Mansukhlal Mandaviya. Madam, with your permission, I rise to lay on the table of the House the paper listed against my name at serial number 7 in today's revised list of business. Shri Gajendra Singh Shekhawat. Speaker, ma'am, with your
kind permission, on behalf of my colleague, Shri C.R. Chaudhary, I lay on the table of the House the paper listed against his name as serial number 8 of today's revised list of business in Lok Sabha. Shri Gajendra Singh Shekhawat, item number 9. Honorable Speaker, ma'am, with your kind permission, I rise to lay the papers on the table listed against my name at serial number 9 of today's revised list of business of Lok Sabha. Shri Arun Jaitley ji. On behalf of my senior colleague Shri Arun Jaitley, Honorable Finance Minister, I introduce a bill of provide of the comprehensive mechanism to ban the unguaranteed deposit scheme and to protect the interest of deposit and for matter concerned with deal with the incidental thereto. Yes, प्लीज मैं सबसे रिक्वेस्ट है माननीय सुषमा जी कोई बहुत गंभीर बात पे स्टेटमेंट देगी, प्लीज प्लीज कोऑपरेट, प्लीज कोऑपरेट, प्लीज देयर इज समथिंग डिफरेंट, यस प्लीज कोऑपरेट, प्लीज आपको जानकारी देना चाह रही है, बहुत गंभीर बात है। She wants to inform you something. Please, only information. कराइए मैडम, कराइए सुषमा जी को। सुषमा जी something different she wants to. Please listen to me. मेरी बात भी नहीं सुनोगे। She wants to inform about the Mosul's 39 people's death. She wants to inform that, at least listen to that. उसको भी नहीं सुनना चाहेंगे, क्या कर रहे हो? मोसुल की बात नहीं सुनना चाहेंगे। No, this is not proper. सुषमा जी, सदन में चर्चा हुई है। अध्यक्ष जी, ऐसा विषय नहीं है जिसे मैं शोर शराबे में रखना चाहूंगी। मैं आपके माध्यम से सभी सांसदों से करबद्ध निवेदन करना चाहती हूं कि मैं एक अशुभ सूचना संसद को देना चाहती हूं जो शोर शराबे में नहीं दे सकती। मामला बहुत संजीदगी का है। ये इराक में बंधक 39 भारतीयों से संबंधित विषय है जिस पर इस सदन ने बहुत बार चर्चा करवाई है और हर बार मैंने कहा कि जब तक मेरे पास कोई ठोस सबूत उनके जिंदा या मृत होने का नहीं होगा तब तक मैं उन्हें मृत घोषित नहीं करूंगी। आज मैं सबूत लेकर आई हूं, इसलिए उस सबूत को यहाँ रखना चाहती हूं। मैं प्रार्थना करूंगी आपसे कि कृपया शांत रहकर मेरी बात सुन लीजिए। ये राज्यसभा में सभी सांसदों ने साथ दिया और बहुत शांति से मैं अपनी बात रख सकी। मैं लोकसभा में भी उतनी ही शांति से अपनी बात रखना चाहती हूँ, क्योंकि जो डीएनए सैंपल हमने भेजे थे उनमें से 38 लोगों के सैंपल मैच कर गए। इसका मतलब है 38 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो गई है। 39 में का भी 70% डीएनए मिल गया है। मैं ऐसी खबर शोर शराबे में कैसे दे सकती हूँ? ये सारा काम जितना कठिन था वो कैसे हुआ ये मैं बताना चाहती हूँ, लेकिन अगर इस तरह का शोर होता रहेगा तो मैं लंबी बात नहीं बता पाऊंगी। वो मार्टियर्स फाउंडेशन की हेड वहां से इराक से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं। मैं नहीं चाहती कि देश दूसरे देश के लोगों के माध्यम से इसको जाने। जब आपके विदेश मंत्री के पास पूरी जानकारी है
कि मैं सदन में जानकारी दूं, और राज्यसभा में मैं देकर आई हूं। बहुत ही शांति से सबने वो बात सुनी। मैं चाहती हूं कि अगर आप मुझे शांति का दान दें तो मैं लोकसभा में भी उस बात को उसी तरह से आपके सामने रख सकूं, और अगर ये यही शोर शराबा होगा तो मैं नहीं बोल पाऊंगी। This is not proper. This is not proper. This is not proper. You just don't want to listen. इतने भी मानवता से बाहर हो गए, इतने भी मानवता से परे हो गए हो। You don't have any feelings about it. This is not proper at all. No, I'm sorry. I'm sorry. इतने भी संवेदनहीन मत बनो, इतने भी संवेदनहीन मत बनो। इस तरीके की राजनीति मत करो, प्लीज प्लीज। दैट विल स्पॉइल ऑल ऑफ। नो, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। रिपोर्ट्स ऑफ स्टैंडिंग कमिटी ऑन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, डॉक्टर संजय जायसवाल। Speaker, Madam, I beg to lay on the table the 109th report, Hindi and English versions, on the National Medical Commission Bill 2017 of the Standing Committee on Health and Family Welfare. Thank you. Statement by Minister Dr. Harshvardhan. Madam, with your kind permission, I beg to make a statement on the status of implementation by the Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology, on the recommendations contained in the fourth report of the department related to Parliamentary Standing Committee on Science and Technology, Environment and Forest on action taken by the government on the recommendations contained in the 296 report of the Committee on Demand for Grants 2017-18, mentioned against my name at serial number 11 in today's revised list of business. The present status of implementation is as per the statement which is made of the President of the House. Shri Kiran Rijiju ji. Madam, I rise to make a statement regarding the implementation of the recommendations contained in the 203rd report of the Standing Committee on Home Affairs on Border Security, Capacity Building and Installations pertaining to the Ministry of Home Affairs. Shri Anand Kumar. पेश करता हूँ कि यहाँ सभा 19 मार्च 2018 को सभा में कार्यमंत्रणा समिति के 53वें प्रतिवेदन से सहमत है। The question is that the House do agree with the 53rd report of the Business Advisory Committee presented to the House on 19 March 2018. Those in favor में से आए, those against में से नो। I think the ayes have it, the ayes have it. The report is adopted. बहुत बहुत दुख की बात है, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि इतने हम राजनीति में हम इतने संवेदनहीन हो रहे हैं, कोई काम नहीं करने दे रहे हैं। अपने ही लोगों के लिए ये संवेदनहीनता अच्छी नहीं है। दिस इज नॉट फेयर। आई एम सॉरी। आप तो कम से कम बैठो, आप तो शांति रखो। नो, आई एम सॉरी, रियली सॉरी। ऐसी सॉरी स्टेट कभी नहीं आई होगी इस देश में। दिस इज नॉट प्रॉपर एट ऑल। सॉरी। ये ट्रैफिकिंग का बिल इंट्रोड्यूस होना है, कई सारे अच्छे काम होना है, बट यू डोंट वांट टू। ऑनरेबल मेंबर्स, I have received notices of motion of no confidence in the Council of Ministers from Sri Subba Reddy and Tota Narasimhan. I am duty bound to bring the notices before the House. Unless the House is in order, I will not be in a position to count the 50 members who have to stand in their assigned places so that I can ascertain as to whether the leave has been granted or not. I request all of you to go back to your seats. ये अच्छी बात नहीं है। आप संवेदन भी नहीं दे रहे अपने मेंबर। अपने हिंदुस्तान के लोगों के लिए भी संवेदना नहीं है। ये कैसी राजनीति? ना दो कॉन्फिडेंस मोशन करना है तो भी तो जाना पड़ेगा। किसी भी बात पे आप सहयोग नहीं कर रहे हैं। प्लीज गो टू योर सीट। आई एम सॉरी।
31st March 2018 at 11 a.m. I'm sorry. లోక్సభ రేపటికి వాయిదా పడింది. లోక్సభలో ప్రతిష్టంభన కొనసాగుతోంది. ఇవాళ కూడా అవే దృశ్యాలు కనిపించాయి. అవిశ్వాస తీర్మానాలపై చర్చ జరుగుతుందా లేదా అన్న ఉత్కంఠ మధ్య ప్రారంభమైన లోక్సభ అన్నాడీఎంకే తెరాస సభ్యుల ఆందోళన మధ్య వాయిదా పడింది. సభ ప్రారంభమైనప్పటి నుంచే కావేరీ బోర్డు ఏర్పాటు కోసం అన్నాడీఎంకే, రిజర్వేషన్ల అంశంపై తెరాస సభ్యులు ఆందోళనకు దిగారు. ఈ రెండు పార్టీల సభ్యుల ఆందోళనతో తొలుత మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు లోక్సభ వాయిదా పడింది. ఆ తర్వాత తిరిగి సభ ప్రారంభమైన అన్నాడీఎంకే, తెరాస సభ్యుల ఆందోళన సద్దుమణగలేదు. సభ సజావుగా సాగేందుకు సభ్యులు సహకరించాలని స్పీకర్ పదే పదే విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈ నిరసనల మధ్య కొన్ని బిల్లులు సభ ఆమోదం పొందాయి. ఆ తర్వాత మంత్రి సుష్మా స్వరాజ్ కీలక ప్రకటన చేస్తారని సభ్యులు శాంతించాలని స్పీకర్ కోరినా ఎలాంటి మార్పు కనిపించలేదు. ఇరాక్లో అపహరణకు గురైన భారతీయుల హత్యపై ప్రసంగించాలని భావిస్తున్నానని, సభ్యులందరూ శాంతియుతంగా ఉంటేనే ఇంత కీలకమైన అంశంపై మాట్లాడగలనని సుష్మా చెప్పినా పరిస్థితిలో మార్పు కనిపించలేదు. అన్నాడీఎంకే, తెరాస సభ్యుల నిరసన సమంజసం కాదని స్పీకర్ చెప్పారు. సభ్యుల నినాదాల మధ్య తెదేపా, వైకాపా ఇచ్చిన అవిశ్వాస నోటీసులను స్పీకర్ చదివి వినిపించారు. అప్పటికే అన్నాడీఎంకే, తెరాస సభ్యుల ఆందోళన సద్దుమణగలేదు. అవిశ్వాస తీర్మానం చర్చకు చేపట్టేలా లేదా అనే అంశంపై ఓటింగ్ నిర్వహించేందుకు సభ్యులు వీలు కల్పించాలని కోరారు. నిరసనల మధ్య లెక్కింపు సాధ్యం కాదన్నారు. అప్పటికీ పరిస్థితిలో ఇలాంటి మార్పు లేకపోవడం వల్ల సభను స్పీకర్ రేపటికి వాయిదా వేశారు. तथापि इनके लिए आज की कार्रवाई में व्यवधान डालना अनिवार्य नहीं है। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न क्रमांक 341 श्री हरदीप सिंह पुरी। Madam, with your permission, I rise to lay the papers listed against my name at serial number 2 in today's revised list of business. श्री रामदास आठवले। Respected Madam, I beg to lay on the table of the House papers a copy of each Hindi and English version listed at serial number 3 against my name in today's revised list of business. Thank you. श्री हंसराज अय्यर। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने नाम के सन्मुख आज के पुनरीक्षित कार्य सूची की क्रम संख्या 4 में उल्लेखित पत्रों के सभापति पर अपनी अनुमति चाहता हूं। श्री कृष्णपाल आपके नाम से आज की कार्य सूची में क्रम संख्या 5 पर अपने नाम के समक्ष सूचीबद्ध दस्तावेजों को सदन का करता हूँ। श्री किरण रिज्जू जी। Table of the House, the papers listed against my name at serial number 6 in today's revised list of business. श्री मनसुखलाल मंडाविया। Madam, with your permission, I rise to lay on the table of the House the paper listed against my name at serial number 7 in today's revised list of business. श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। Speaker ma'am, with your kind permission, on behalf of my colleague Shri C.R. Chaudhary, I lay on the table of the House the paper listed against his name as serial number 8 of today's revised list of business in Lok Sabha. श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, item number 9. Honorable Speaker ma'am, with your kind permission, I rise to lay the papers on the table listed against my name at serial number 9 of today's revised list of business of Lok Sabha. श्री अरुण जेटली जी। Speaker, on behalf of my senior colleague Sri Arun Jaitley, Honorable Finance Minister, I introduce a bill of provide of the comprehensive mechanism to ban the unguaranteed deposit scheme and to protect the interests of deposit and for matter concerned with the incident. This is not proper at all. I'm sorry. ये ट्रैफिकिंग का बिल इंट्रोड्यूस होना है, कई सारे अच्छे काम होना है, but you don't want to. Honorable members, I have received notices of motion
motion of no confidence in the Council of Ministers from Sri Subba Reddy and Tota Narasimhan. I am duty bound to bring the notices before the House. Unless the House is in order, I will not be in a position to count the 50 members who have to stand in their assigned places so that I can ascertain as to whether the leave has been granted or not. I request all of you to go back to your seats. ये अच्छी बात नहीं है. आप संवेदन भी नहीं दे रहे अपने मेंबर. अपने हिंदुस्तान के लोगों के लिए भी संवेदना नहीं है. ये कैसी राजनीति? ना दो कॉन्फिडेंस मोशन करना है तो भी तो जाना पड़ेगा. किसी भी बात पे आप सहयोग नहीं कर रहे हैं. प्लीज गो टू योर सीट. आई एम सॉरी. The House is not in order. I will not be able to bring the notices before the House. The House stands adjourned to meet again on Wednesday, the 21st March 2018 at